Okay, so we move to the entry on 21st. Hey, Suraj, is it properly visible now? Yes, ma'am. Okay. So we move to the entry on 31st, on sorry, 21st. Yes, Mridul, Mridul, Yes, yes, ma'am. what is the entry to be recorded? We have received cash from Johnson. Ma'am, So what? cash account debit to Johnson account. Okay, so cash account debit as per traditional classification. Okay, thank you, Mridul. You can mute yourself. So as per the traditional classification, cash is coming in the business, and as per the modern classification, your asset is increasing, so it will be debited. Johnson was a debtor for the business. Now, if he is paying business back, then my debtors are decreasing by rupees 12,000. Any fall in assets is credited. Okay, and Johnson being the debtor here is actually a personal account. Here he is the giver, so his account will be credited and by an amount of rupees 12,000. Okay, after this, we Ma'am, asset and Vikas, your voice is breaking. Chat box में डालो. ma'am like क्या हाँ एसेट में आ रहा हाँ वाला जॉनसन पर्सनल अकाउंट में आएगा and debit the receiver, credit the giver. So Johnson is the giver here, so he is credited. model like Modern classification, that what I can make out from your voice, it is cracking in between. As per modern classification, Johnson is a debtor. Debtor is an asset for the business, and hence Johnson by making the payment is actually reducing the debtor balance. पहले 20,000 का debtor था Johnson, अब 8,000 का रह जाएगा because he is making the payment of 12,000. So there is a reduction in the assets of the business, okay and okay hence that will be credited. Okay, next entry, Aryaman. Hello. Yes, Aryaman. Ma'am, S Khan account to cash account. Okay, absolutely right. Now, S. Khan was a creditor for the business, and we are making payment to the creditor. So, our liability is decreasing. Liability जब decrease होती है तो debit होती है. S. Khan is again personal account. Ariman, mute yourself. Is a personal account. So, here he is the giver. Sorry, he is the receiver. So his account is debited. Cash is going out of the business. Real account going out of the business. Cash is credited. Asset is reducing. So it is credited. Entry becomes S Khan account debit to cash account by rupees 20,000. Okay, after this, Ishan. Yes, ma'am. Yes, Ishan. Entry for 27th. Paid wages for 2000. Uh, आपने क्वेश्चन नहीं करा. You are not solving the question. You're a commerce student, Ishan. yes, ma'am. So then you should be able to post the entry, record the entry. क्या होनी चाहिए entry यहाँ पर? Wages क्या होते हैं business के लिए? Expense.
एक्सपेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में? Yes, ma'am. हाँ, so Expense, when we are paying the expense. हाँ, so wages is an expense. Expenses increase, they are debited, and Okay, ma'am. we are making the payment in cash. Yes, ma'am. So cash is going out of the business. It will be credited. I want you to be more attentive in the class. Now you are grown-ups. Otherwise, next time what I'll do is I'll ask you to show me your register also on the screen. Okay? So don't force Okay, me to ma'am. do that. You will be attentive throughout the class. Okay? Okay, ma'am. Okay. Okay, yes, Suraj, you had a question. या मैम इन 27 नंबर क्वेश्चन जैसा कि जो लाइक कंपनी जो है विच पे किया तो दैट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड दैट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट मैम Yes. एक वेज को क्या वेज अकाउंट बोलेंगे कि क्या बोलेंगे वेजेस अकाउंट बोलेंगे बेटा. इसको सिर्फ वेज अकाउंट ही बोलेंगे हाँ हाँ, वेज अकाउंट ही बोलेंगे. ओके मैम एंड व्हाट अबाउट स्टेशनरी मैम Stationery is a stationery account. Okay, these ओके all मैम are expenses which are made. Now, here you are given the transactions for 1 month. Okay, so उसमें अभी हम हर का अकाउंट सेपरेट लिख रहे हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें लगता है कि स्टेशनरी का बहुत छोटा एक्सपेंस है या फिर इसी तरह कोई और आपने एक्सपेंस करा है, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी के अलावा हम क्या परचेज कर सकते हैं, से कुछ सर्विस एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, एनुअल सर्विस कोई करवाई है, फॉर एग्जांपल फिल्टर की सर्विस करवाई है अपनी फैक्ट्री में, तो वो एक्सपेंसेस बहुत माइनर हैं एज कंपेयर टू दी एक्सपेंसेस. पोस्टेज के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत माइनर है, बिजनेस का स्केल बहुत ज्यादा है, तो इन सबको क्लब करके हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना सकते हैं. अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें काम बढ़ेगा, इन सबको टोटल करके मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं. थैंक यू मैम ठीक है. ओके, देन वी कम टू द एंट्री ऑन 30th. यस, मयंक. मैम जस्ट अ सेकंड मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट Yes, so one asset is increasing, one is falling. Bank account increases, the cash balance falls. Entry becomes bank to cash. Okay, and Mukul, just give us the last entry. Mukul is left. Ritesh. Ritesh, you are not audible. Just post in the chat box. Sahil. Sahil is not here. Yes, put the entry, last entry in the chat box fast. So the last entry says cash withdrawn from bank for personal use is rupees 20,000. So when the owner withdraws money for personal use, it is known as drawings, and drawings are adjusted from the capital. Okay, okay. Now this amount has been withdrawn from bank. So drawings are adjusted from the capital account. Drawings account is also a personal account. Okay, so the entry becomes, yes, Ritesh and Sahil, you are correct. Drawings account will be debited. Your capital is reducing by the amount of drawings, and bank account is also falling. Bank balance is also falling. So bank account will be credited. So the entry, last entry becomes
Drawings account debit to bank account. As per modern classification, drawings is a part of capital account. If the capital is reducing, it is debited. The asset here, the bank balance is reducing, it is credited. The entry becomes drawings to bank. Yes, Vandan. मैम मैम लास्ट एंट्री में मैम मैम कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट नहीं कर सकते? नहीं, कैश नहीं करोगे ना इसमें। आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा है ओनर यस और मैम। पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो पहली बात तो ये विड्रॉल ड्रॉइंग्स में आएगा। ठीक यस है, इससे बिजनेस का कैश तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो यस कैश मैम। अकाउंट आ ही नहीं सकता वहां पर। ये तो यस पर्सनल पर्पस के लिए है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा। यस मैम। ओके यस मैम। ओके। यस, एनी अदर डाउट इन एनी ऑफ द एंट्रीज क्लास? मैम यस अयान। मैम 31 में हम पर्सनल यूज के लिए पैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैम ड्रॉइंग अकाउंट की जगह हम आनंद अकाउंट लिख सकते हैं? बेटा, ओनर के नाम से अकाउंट नहीं होता, उसका जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो ड्राइंग्स का फिर अलग अकाउंट बनाते हैं हम। और जब अभी आगे हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बैलेंस शीट में ये जो ड्राइंग्स का बैलेंस होता है फाइनल, वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। तो वैसे आपको अलग अकाउंट ही मेंटेन करना है थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स का। ओके मैम। मैम यस सिमरन। मैम 24 में कैश की जगह बैंक अकाउंट नहीं होगा, उन्होंने बोला है पेड एस खान ऑन अकाउंट। S Khan on account means, this I repeated yesterday also, that S Khan on account means कि जो उसका पहले बैलेंस चल रहा है बिजनेस में, उसके अकाउंट पे हम वो पे कर रहे हैं अमाउंट। ये बैंक अकाउंट से पे नहीं हो रहा। एस खान पहले हमारा डेटर था बिजनेस में। नो, ही वाज अ क्रेडिटर। वी बॉट गुड्स फ्रॉम एस खान for 50,000. So he was already a creditor for the business. So there on that outstanding balance, we have paid 20,000. This is what is the meaning of the phrase on account. ओके मैम। Okay. Okay. Any further questions? So what I'll do is, since we are solving this, we have recorded the journal entries. I'll introduce the concept of ledger here only, because in continuity it will make more sense, but we will be practicing more questions on journal entries also. So because ledger as such won't be coming in the paper, ledger, trial balance, these are concepts which I'll give you an overview of in this question. If anything comes, then it will be from the journal entries. Okay, that is what I hope for the paper. That is what has been the trend in the previous papers. So ledger I'll introduce here, trial balance also I'll introduce here, but we'll move back to more questions on journal entries also. Okay, so just let me bring a blank page here. Okay, so I introduced the concept of ledger earlier also in the class, that ledger post recording the entries in journal, the next step is preparation of ledger accounts. Okay, that is clubbing together entries of similar nature under a single account. So कैश से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं थ्रू आउट, वो सब कैश अकाउंट में आएंगी। कैपिटल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं थ्रू आउट, वो सब कैपिटल अकाउंट में आएंगी। दिस इज हाउ लेजर इज मेंटेन्ड। ओके, coming to what a ledger looks like, as told earlier, it is having a debit side, it is having a credit side. Debit side is the left hand side of the account, credit side is the right hand side of the account. First column is for date, then you have particulars,
Then you have a column known as folio. F here stands for folio. Folio, and then you have the last column as amount. Okay, I'll explain each of the terms. The right hand side, the credit side, is a mirror image of the left hand side. So, which means you are again having the column of date, then particulars, then again a folio column and an amount column. So here I'm writing everything in short in the paper, or when you are practicing questions, we are not using any short forms in the paper. Not portfolio, it is only folio. So let us see what each of the column represents. Date is the date on which that particular transaction has taken place. Okay, so for example, if I say this is my cash account, okay, first entry आपकी cash से शुरू हो रही है, so for the time being, let's suppose this is the cash account for the business. So the first entry is taking place on 1st of January. So I write the first as the date under the date column. Particulars is where you post the entry. Posting means transferring the record from the journal to the ledger. That is preparation of ledger accounts. Okay. Now, how that posting is done, we'll see. Folio. If you remember, there was a column on ledger folio in the journal format also. LF करके भी column था. Yes, you can note it down. Otherwise, I'll share this also on the Google Classroom. But for the time being, you should note it down because you will be preparing all the accounts after this. So you should know the format. Okay. तो जर्नल में आपको याद होगा लेजर फोलियो था. लेजर में सिर्फ फोलियो है. What does this mean? Under the journal ledger folio meant the page number. Now, this is obviously quite irrelevant or redundant now क्योंकि अब registers में accounts maintain नहीं होते in most of the business. Small scale में या sole proprietorship में हो जाते होंगे. Otherwise, all this is done electronically or using softwares. So just to keep a record of where that entry is in the ledger, journal में ledger folio का column होता है जहाँ पे बताया जाता है कि वो particular entry कौन से page number पे है. तो ledger folio actually meant the page number on which that particular account has been maintained. तो जब आपने जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो से फॉर एग्जांपल पेज नंबर 5 पे आपने कैश अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर उसके आगे आप 5 लिख देते थे. कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 6 पे है तो उसके आगे लेजर फोलियो के कॉलम में 6 लिख दिया. ये रेलेवेंस होता है एलएफ कॉलम का अंडर द जर्नल. ओके. Now, what is the folio column? It is just the vice versa. Folio will tell you where that entry has been recorded on which page number under the journal. So, say this was the first page of your journal. तो जब आप ये एंट्री पास करोगे तो फोलियो कॉलम में इस एंट्री के लिए आप 1 लिख दोगे. So this is just keeping a track of where that particular transaction has been recorded. Okay, now how the entries are passed from the journal to the ledger, or how the entries are posted from the journal to the ledger. तो इसको याद करने का सबसे easy तरीका होता है that we should be very clear all the entries on the debit side, they start with the
prefix to, and all the entries on the credit side, they start with prefix by. तो डेबिट वाली सारी एंट्रीज टू से स्टार्ट होती हैं, क्रेडिट वाली सारी एंट्रीज बाय से स्टार्ट होती हैं। जो अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कभी भी उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। तो कैश अकाउंट में कहीं भी दोबारा कैश, टू कैश या बाय कैश नहीं आएगा। ओके, so what we do is, from the entry, since I'm starting with the cash account, I move here to the first entry on cash and I see that cash account has been debited. So I directly move to the left hand side of the ledger account, that is on the debit side. कैश का नाम यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं फॉर द टाइम बिंग क्या कर रही हूँ, कैश को हटा दिया। एंट्री में क्या बचा, टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज व्हाट आई राइट हियर, टू कैपिटल अकाउंट, and I write the balance of 5 lakh. So you hide. Yes, Ariman. Ma'am, it is opposite of journal. Ledger. Yes, ma'am. Yeah, kind of, because you don't record that particular account here and you're taking the opposite part. Yes. Yes, ma'am. Here we take 2 for the debit, but here we'll take 2 for 2 for credit, but here we'll take 2 for the debit part. Basically, what you are doing is you are telling that cash account is debited to capital account. That is what you are doing in the ledger. तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, पर कौन से अकाउंट से डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट से। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो क्लास, cash account has been debited, but which account has been credited? It is the capital account. So I cover the debit entry and what remains is to capital account. So, and there I record the amount of 5 lakh rupees. Okay, just to make things more clear, what I do is I'll prepare the opposite account also here, so which is our capital account. Debit and credit, again date, particulars, folio, amount, date, particulars, folio and amount. ठीक है, especially science students, please understand first, then I'll give you time to make more accounts. Every account that you have recorded in the journal will be prepared here. Okay, तो पहली एंट्री का पहला पार्ट कैश अकाउंट में गया, तो दूसरा पार्ट कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, सेम रूल फॉलो करेंगे, टू और बाय। जो भी एंट्री डेबिट साइड पे होगी, जहां पर भी कैपिटल डेबिट हुआ है, टू से स्टार्ट होगा, जहां पर भी कैपिटल क्रेडिट हुआ है, बाय से स्टार्ट होगा। यस गौतम। मैम बट ये टू और बाय वाला जरूरी थोड़ा ना होता है, जरूरी तो नहीं होता नहीं लिखना? हाँ, नहीं सर, अब तो ऑप्शनल है, बट समझाने का अभी भी बेटा यही तरीका होता है, टू और बाय से ही समझाते हैं। एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग टू एंड बाय इन दी पेपर ऑल्सो, in the questions which we are solving, but yes, now this is something which is optional. तो मैम अगर जैसे हमें तो आता कॉमर्स वालों को, तो हमारे लिए लिखना जरूरी है टू और बाय, हमारे लिए भी? तो आप लोग भी लिखो। ओके मैम। हाँ, वैसे प्रैक्टिकली अब टू और बाय लिखा नहीं जाता, दैट यू आर राइट, बट you stick to this in the paper, from the paper point of view. Okay, ma'am. Okay, so now when you see this entry, capital account has been credited. Okay, so I will move to the right hand side of the account, of the capital account. कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट दोबारा नहीं लिखा जाएगा, तो अब उसका ऑपोजिट क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय कैश अकाउंट, एंड द अमाउंट इज
5 lakh rupees. Okay, so I write the amount here, 5 lakh. Capital account has been credited by 5 lakh, so I write the amount 5 lakh here. Which account has been debited? Cash account, so by cash account. तो एंट्री का एक पार्ट कैश अकाउंट में गया, एक पार्ट कैपिटल अकाउंट में गया. ऐसे करके आप कंटिन्यू करते हो, जस्ट सेकंड, कंटिन्यू करते हो सारी एंट्रीज के साथ. ये सारे मन. Ma'am, then for a single journal we have two ledgers. Yes. For every single journal entry, you are moving to two ledger accounts. At least two ledger accounts. That is what we have done till now. There can be more than two accounts, जिसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, वो मैं आगे करवाऊंगी आपको. अभी आप ये समझ लो कि हर जर्नल एंट्री के लिए दो अकाउंट्स हैं. यस वंदन. मैम मैम फर्स्ट वाली एंट्री बताइए, उसके तो वन ही अकाउंट बना है मैम. मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. मैम इसमें हम दो अकाउंट कैसे आ गए मैम? दो अकाउंट, कैश अकाउंट अलग अकाउंट बना है, कैपिटल अकाउंट अलग अकाउंट बना है, तो दो अकाउंट्स ही तो हुए. अच्छा मैम, हर एक के लिए हम दो दो मिनिमम बनाने पड़ेंगे? मिनिमम कैसे बेटा? आप देखो आगे जो कैश की एंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ये 21st वाली एंट्री है, कैश टू जॉनसन. ये वाली एंट्री जो फर्स्ट एंट्री है ना यहाँ पे, तो इसमें कैश अकाउंट तो पहले ही बना हुआ है. अब मुझे नया अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा? जॉनसन अकाउंट. यस मैम. ओके, तो ऐसे करके आप अकाउंट्स बनाओगे. जो भी पहली बार अकाउंट आएगा उसके लिए आपने प्रिपेयर करना है सेपरेट अकाउंट. If it is repeated, then you keep on posting the entries. यस मैम. Okay, yes, Vikas. Vikas, you had a question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, cash account and capital account. दोबारा रिपीट करो बेटा एक बारी क्वेश्चन. मैम इसके पार्ट है, इसके अंदर कैश अकाउंट जो है वो हाँ, डेबिट हो रहा है. तो मैम यहाँ पे आपने क्रेडिट वाले उसमें क्यों लिखा है? कहाँ पे? मैम एंट्री कैपिटल में. जी. कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना एज पर दी एंट्री. हाँ जी. तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएंगे. और कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट. तो बाय कैश अकाउंट करते हैं. ओके ओके मैम. कैश को तो हमने डेबिट ही करा है यहाँ पे. ये 5 लाख से डेबिट ही तो करा है. जो अमाउंट थी यहाँ पे 5 लाख, उससे डेबिट ही करा है यहाँ पर. अच्छा ओके ओके ओके, अलग अलग वो बना. हाँ, सबके लिए अलग अलग बनाना है. I'll show you posting of one more entry. Then all of you start trying posting the entries. मैम Okay. एंड Yes. नीचे कहीं और एंट्रीज में कैश यूज हुआ है तो फिर वो इसी वाले कॉलम में आएगा? हाँ, इसी में आएगा. ऐसा करती हूँ मैं, वही एग्जाम्पल लेती हूँ. Say this entry, I am taking this entry here, and I'll just be raising some entries here so that I can show you the Johnson account also here. That will make things more easy to understand. Okay. So this entry on 21st, you will move chronologically. आप first के बाद अब जो next entry है second की, आप second की entry से continue करोगे. But मैं यहाँ पर क्योंकि cash repeat हो रहा है, I'm showing you the Johnson account also. So now here two accounts are there. One is cash account. The second is Johnson account. So the new account I will be preparing here is the Johnson account. Again, you draw the format properly. और जॉनसन अकाउंट में पहले से एक एंट्री होगी. कौन सी डेट पे हुई थी पहले जॉनसन अकाउंट में एंट्री? 14th को हुई थी. तो वो एंट्री आप जब करोगे आप उस हिसाब से पोस्ट कर देना. Okay, I am showing you how to treat this entry. So in this entry again, cash account has been debited and this amount was
12,000. Okay, so what I do is, please pay attention. I move first to the cash account. Cash account has been debited. So I move to the left hand side of cash account. Okay, there on 21st, 21, 1, I write down, I debit this account by 12,000. जब आप अमाउंट डिसाइड करते हो तो आप देखते हो उस अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करा है. तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट करा है 12,000 से, तो मैं यहाँ पर 12,000 लिख दूंगी in the amount column. Which account has been credited? So I first put the prefix to and then cover the cash account. Which account has been credited? It is the Johnson account. So I write down to Johnson account here, debited cash by 12,000. Okay. Just the opposite takes place in Johnson account. We can very clearly see here Johnson account has been credited. I move to the right hand side of Johnson account. On 21/1 I write buy. एंड बाय किससे करेंगे? अब जॉनसन को हटा के हम जो बची हुई एंट्री है कैश, वहां पे हम कर देंगे बाय कैश अकाउंट. जॉनसन अकाउंट हैज बीन credited by 12,000. So here I write the amount 12,000. So this is how dual effect takes place. जो आपने डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल करी थी, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करी थी, हर एंट्री का, हर जर्नल एंट्री का, हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 अकाउंट्स पे इम्पैक्ट आता है. दैट इज व्हाट यू आर experiencing here, that is what you are proving here. Okay, so this is how you move entry by entry. फिर अगर आप वापस जाते हो अपने क्वेश्चन में, आई थिंक सेकेंड एंट्री वॉज बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करा था. यस, तो नेक्स्ट एंट्री वॉज बैंक टू कैश ऑन 2nd of January. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो अब अगेन कैश अकाउंट तो आपने प्रिपेयर करा हुआ है, अब आप नया अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करोगे? बैंक अकाउंट. इस एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. तो आई विल मूव टू द राइट हैंड साइड ऑफ द कैश अकाउंट. बाय कैश अकाउंट पहले कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? इट इज बीइंग क्रेडिटेड बाय 4 lakh rupees. So here in the amount column, I write down 4 lakh. Okay, there is some paucity of space with me. आपके साथ आप रजिस्टर में कर रहे हो क्वेश्चन तो आप बहुत नीटली ये कर सकते हो. So I credit the cash account by 4 lakh, but what will I write here? I will write by bank account. ठीक है, और यहाँ पे say this is the bank account. I'm just writing the entry roughly here. So बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. This account is being debited. So I move to the right hand side of bank account. On 2nd of January, I write down to cash account and the amount will be 4 lakh. ऐसे करके हर एंट्री के दोनों एस्पेक्ट्स आपने लेजर में रिकॉर्ड करने हैं. ओके, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस. एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज आस्क. दिस शुड बी क्लियर.